Okay, so our next point is types of medical coding. Okay, so we have already seen what is medical coding. Okay, so in medical coding there are different types. Okay, so we'll see that all the types. ठीक है, कितने types के medical coding होते हैं. Okay, so in medical coding, like based upon company, ठीक है, most of the companies have HCC coding. Okay, but there are also more than 10 to 15 types of codings. ठीक है, जहाँ पे different सॉफ्टवेयर्स होते हैं, different गाइडलाइंस, different प्रोजेक्ट्स होते हैं. So based upon the company or based upon the projects, the medical coding types will change. Okay, so first is evaluation management coding. Okay, so it is a CPT type of coding. Okay, so इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट फिजिशियन के पास विजिट करता है, इन पेशेंट में विजिट करता है या फिर आउट पेशेंट में विजिट करता है. ओके, सो और उसको कुछ ट्रीटमेंट दे रहा है, लाइक इंजेक्शन दे रहा है, डायग्नोज कर रहा है कुछ डिसीज, लैब टेस्ट ऑर्डर कर रहा है, या फिर उसको सिर्फ साइन एंड सिम्टम्स मॉनिटर कर रहा है. ठीक है, या फिर वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर रहा है. सो ऑल दिस सर्विसेज को हम इवैल्यूएशन मैनेजमेंट के अंडर हम कंसिडर करते हैं. ठीक है, एंड बेस्ड अपॉन द जो फिजिशियन है, डॉक्टर है, उसने पेशेंट के साथ कितना टाइम स्पेंड किया है. ठीक है, उसके बेस्ड अपॉन दैट विल गिव दिस इवैल्यूएशन मैनेजमेंट कोडिंग. ओके, second type is very common type of medical coding, that is HCC coding. ठीक है, so HCC stands for hierarchical condition category coding. Okay, also called as risk adjustment coding. ठीक है, so इसमें ICD-10 कोडिंग रहता है. ठीक है, so इसमें हमें सिर्फ डिसीजेस के कोड करने. ठीक है, नॉट अबाउट द प्रोसीजर्स, सर्जरीज एंड ड्रग्स और कुछ जो कोड्स है वो कोड्स नहीं करने. ओनली द डिसीजेस वी हैव टू कोड. ओके, फॉर एग्जांपल सो मोस्टली इट इज डन फॉर लाइक पेशेंट्स जिसका एज अबव 65 ईयर्स होता है. ठीक है, दैट इज मेडिकेयर ऑल्सो कॉल्ड एज. सो जो पेशेंट्स को अगर एज उनका लाइक मोर देन 65 है, so that patient will have multiple diseases. Okay, conditions such as like उस पेशेंट को डायबिटीज रहेगा, हाइपरटेंशन रहेगा, हाइपोथायराइडिज्म रहेगा, मॉर्बिड ओबेसिटी होगा, उसको मे बी ऑस्टियोपोरोसिस होगा, या फिर ही माइट हैव हाइपरटेंशन. ओके, ही माइट हैव क्रोनिक किडनी डिसीज. ओके, और वो पेशेंट भी लाइक ही विल टेक मोर देन 5-10 मेडिकेशंस उसके लिए. ठीक है, उसको कोलेस्ट्रॉल, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया होगा. So all these are the diseases. So all these diseases are coded into this HCC coding. Okay, so most of the companies in India having this HCC coding. Third is inpatient DRG coding. This is also called as IP-DRG coding. So it is in this they are using the ICD-10 PCS. ठीक है, so in HCC they are using ICD-10 CM. ठीक है, so ICD-10 CM it stands for इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस 10th रिवीजन क्लिनिकल मॉडिफिकेशन. नाउ ये जो ICD-10 CM है, ये बुक जो है डिजाइन किया है बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. ओके, हम इन नेक्स्ट मॉड्यूल्स विल लर्न अबाउट ICD-10 CM. ओके, इन ब्रीफ. And in inpatient DRG coding, they are using the ICD-10 PCS, means ICD-10 procedural coding systems. मीन्स जो भी सर्जरीज हो रही है उस सर्जरीज को हमें कोड करना है. ओके, सो इट इज हाईली कॉम्प्लिकेटेड एंड हाईएस्ट पेड टाइप ऑफ कोडिंग. ओके, IPDRG in this field, like some companies offer like 10 lakhs to 15 lakhs packages as well. Okay, for the coder levels. Okay, based upon the company, because it's critical. And in this coding, like most of the doctors are also working, like BHMS, BMS. Okay, or even MBBS doctors are working in this coding, because इसमें प्रोसीजर आइडेंटिफाई करना पड़ता है, कौन सा टाइप का प्रोसीजर हुआ है, कौन से डेप्थ पे हुआ है, एंड देयर आर लॉट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोसीजर्स. और जो पेशेंट एडमिट होगा तो द प्रोसीजर कॉस्ट इज वेरी मच हाई. Okay, so that's why it's very critical and complex as well. Next is surgery coding. So अगर कोई भी पेशेंट है
तो उसको अगर सर्जरी हुआ है कोई तो उसके लिए ये कोडिंग है. सो इन दैट टिपिकली इट इन्वॉल्व सीपीटी कोड्स. ठीक है. सो सीपीटी इज करंट प्रोसीजरल टर्मिनोलॉजी. Okay, so in current procedural terminology book, all the procedure surgeries will have the codes for surgery coding. Okay, so इसमें क्या है, based upon the type of surgery we have to give the codes. Okay, so इसमें भी अलग अलग classifications है, integumentary system, musculoskeletal system, respiratory system, digestive system, okay, and reproductive system, nervous system. So based upon the system we have to give this surgery codes. नेक्स्ट इज डिनाइल्स कोडिंग मीन्स व्हाट, अगर कोई कोडर है उसने एक कोड किया है बट जो इंश्योरेंस कंपनी है उस कंपनी ने वो क्लेम रिजेक्ट कर दिया. ठीक है, दैट कोड इज रॉन्ग या फिर दैट कोड इज नॉट वैलिड. ठीक है, या फिर गलत कोड दिया है तो सो इन दैट टाइम द कोडर्स विल वर्क अगेन टू फाइंड द डिनाइल रीजन कि वो क्लेम क्यों रिजेक्ट हुआ है और उस पर दे विल गिव अ सोल्यूशन. ठीक है, टू इंक्रीज द रीइंबर्समेंट. ओके, मतलब दे विल असाइन द करेक्ट कोड या फिर डिनाई क्यों है उसका रीजन दे विल चेक. ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ डिनाइल्स कोडिंग. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द हाईएस्ट पेड category. Next is pathology coding. So in pathology, laboratory coding means all the blood test, drug test, urine analysis, hematology and जो भी लैब में टेस्ट होते हैं, so all these tests are done in the lab and pathology coding. Okay, so very few companies do this lab path coding. Okay, but also it's one of the type. Okay, इसमें भी CPT codes use होते हैं. नेक्स्ट इज रेडियोलॉजी कोडिंग. सो रेडियोलॉजी कोडिंग इसमें जो मोस्टली है ऑल द एक्सरे, सिटी स्कैन, एमआरआईज, ईएमआरएज, अल्ट्रासाउंड, ओके, फ्लूरोस्कोपी, एक्सरेज एंड एवरीथिंग. सो इसका कोडिंग होता है रेडियोलॉजी कोडिंग में. The next is outpatient coding. So this is for the OPD patients. Like the next is inpatient coding. So जो भी patient, so there is a difference outpatient and inpatient. So अगर कोई patient है वो visit करता है clinic and उसको within 24 hours ही उसको मतलब treatment मिल जाता है. So that is a outpatient. And अगर कोई patient है वो inpatient means he is getting hospitalized for more than 24 hours. ठीक है, सो वहाँ पे उसके लैब टेस्ट होंगे, उसको सर्जरी हो सकता है, उसको फिर वहाँ पे ब्लड टेस्ट हो सकता है या फिर उसको वहाँ पे कुछ वेंटिलेटर पे रख सकते हैं या फिर इन आईसीयू रख सकते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज ए इन पेशेंट कोडिंग. द नेक्स्ट इज एनास्थेशिया कोडिंग. सो जनरली देर आर टू टाइप्स ऑफ एनास्थेशियाज लाइक लोकल एनास्थेशिया एंड जनरल एनास्थेशिया. ओके, सो लोकल एनेस्थेशिया मीन्स व्हाट कि अगर लाइक स्मॉल सर्जरी हो रहा है लाइक मे बी ऑन हैंड्स और ऑन द फुट और ऑन फिंगर्स, so they will the doctor will only give the anesthesia only on that particular area. That is called as a local anesthesia. Okay, general anesthesia means what कि अगर let's say patient का कुछ फ्रैक्चर का सर्जरी हो रहा है या फिर उसका हार्ट सर्जरी हो रहा है, ब्रेन सर्जरी हो रहा है, so that patient will feel the pain all over the body. Okay, so in that case we cannot just give the anesthesia to the particular area. ठीक है, उस टाइम पे हमें वो एनास्थेशिया ऑल ओवर द बॉडी में देना पड़ेगा. ओके, सो द पेशेंट विल गो इन कोमा और डीप स्लीप. ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ जनरल एनास्थेशिया. ठीक है, सो एनास्थेशिया कोडिंग रहता है, बेस्ड अपॉन दिस कोर्स देयर विल बी एनास्थेशियोलॉजिस्ट बिलिंग. ओके, उसमें भी सर्जरी कौन सा हुआ है, एनास्थेशिया का टाइप क्या है, पेशेंट को कितने टाइम तक एनास्थेशिया दिया है. ठीक है, सो पेशेंट का एज क्या है. ठीक है, so based upon all these criterias the anesthesia coding will be done. Okay, the next is dental coding. So this dental coding is mostly done mostly not covered in the insurances. Okay, but this dental coding is mostly done in UAE, like in Dubai region. Okay, they are this is very famous dental coding and they are having a lot of openings over there. सो उसमें जो भी डेंटल रिलेटेड सर्विसेज है इसमें कवर्ड रहता है. सो ऑल दिस डेंटल सर्जरीज, क्लीनिंग, वॉशिंग एंड रूट कैनल सर्जरीज एंड ऑल दैट, cavities and all, so they will just code that all that services. That is called as a dental coding. And last one is a home health coding. So home health, like the name suggests, जो भी patients है like if they are above 70 years old,
या फिर किसी पेशेंट को डिसेबल्ड है पेशेंट, उसको लाइक ही कैन नॉट वॉक, ओके, सो ऑल दिस पेशेंट्स विल बी इन होम बाउंड, ओके, वो ऑफिस या क्लिनिक में नहीं जा सकते, राइट। सो उन पेशेंट्स के लिए द क्लिनिशियंस, नर्सेस, डॉक्टर्स विल come to that patient's home and they will give the healthcare services to them, okay, that is called as a home health coding, ठीक है। सो मतलब जो पेशेंट हॉस्पिटल नहीं जा सकते वहाँ पे वो पेशेंट लाइक नर्सेस या डॉक्टर्स उसको होम विजिट करके दे विल गिव इंजेक्शंस, दे विल चेक दैट, they will take the blood reports, they will check the lab test and everything they will do. So this is the home health coding, ठीक है। So based upon the type, based upon the company, based upon the project, okay, so most of the companies will have different types of coding, okay, so based upon the project and based upon the requirement the company can change the specialty also, ठीक है। मीन्स लाइक अगर कोई पर्सन let's say evaluation management coding में काम कर रहा है coder, but that project is completed, they can shift that person to another like emergency department coding or anesthesia coding, okay, so based upon the company requirement this projects will change, okay, but there are different types of medical coding, okay, thank you.